Assalamu alaikum students. Today we will talk about geostrategic significance or importance of Gwadar port. In the previous lecture, we threw light on its history and general profile of Balochistan province. And in the last lecture, we discussed some historical aspects of this uh, very significant Gwadar port. Now, in this lecture, we will discuss the geostrategic importance of Gwadar port. You may like, subscribe this channel for your preparation in the comparative examinations. And the important aspect of this channel is that the relevant information and guidelines are filtered out and they are made part of these lectures. You may rely on it as your single source. These are a kind of notes, ready-made notes for you, and these are equally important and helpful for the general viewers who want to enhance their general knowledge and the knowledge about their country. So these lectures are in a series, and these are in a sequence which are supposed to complement your knowledge and preparation. So if you want to know the complete history of Balochistan issue, you may refer to the topic on Balochistan issue and also the historical aspects of Gwadar port, which was the last lecture. It is lecture number 91, and in the lecture number 90, we discussed the historical aspects of Gwadar port. So this was the question in 2005, Current Affairs CSS. The Gwadar port would have great strategic significance in addition to its vast economic potential, not only for the uplift of Balochistan, but for the neighboring countries like China, Afghanistan, and Central Asia Comment. याद रखिएगा 2005 में क्वेश्चन इस तरह के आते थे जिसमें गवादर पोर्ट की सिग्निफिकेंस के बारे में बात होती थी, लेकिन अब चूंकि सी पैक का प्रोजेक्ट आ चुका हुआ है और सी पैक जो है वो गवादर पोर्ट से स्टार्ट होता है। इसका एक एंड जो है वो गवादर पोर्ट है, जबकि दूसरा एंड जो है वो वेस्टर्न चाइना का एक प्रोविंस है शिनजैंग, वहां तक ये जाता है। तो अब ज्यादातर चांसेस यही हैं कि गवादर पोर्ट के साथ सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। सी पैक की इंपॉर्टेंस, सी पैक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या रोल है, और चूंकि ये गवादर पोर्ट और सी पैक की अब एक जैसी इंपॉर्टेंस बन चुकी है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लिहाजा दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब गवादर पोर्ट और सी पैक के मुतालिक क्वेश्चन जो है वो हॉट टॉपिक्स हो सकते हैं 2022 के सीएसएस में और इवन इन दी कमिंग एग्जाम्स। ये गवादर पोर्ट की आप लोकेशन देख सकते हैं, ज़िला है गवादर, और ये बलूचिस्तान के डिफरेंट अजला मौजूद हैं इस मैप के ऊपर, आप देख सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि कोस्टल बेल्ट है काफ़ी वो मिलती है बलूचिस्तान के साथ, जिसमें और मारा है, पसनी है, गवादर है, जीवानी है, और एक तरफ बॉर्डर जो है बलूचिस्तान का ईरान से टच करता है, ऊपर बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, इधर एक तरफ पाकिस्तान का सूबा सिंध और पंजाब, और ऊपर खैबर पख्तूनख्वा। ये आप देख सकते हैं गवादर जो है वो चाबहार जो ईरान की एक पोर्ट है, सी पोर्ट, उसके साथ इसकी प्रॉक्सिमिटी है। और ये आप बिल्कुल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर जो पानी की गुजरगाह है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ, इसका नाम भी याद आ जाएगा कि क्या नाम है इसका। आई एम जस्ट रिकॉलिंग द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट। इसका जो नाम है
that is जी बताता हूँ आपका, इसका नाम जैसे याद आता है मुझे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इसका नाम है। ये बिल्कुल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर और ईरान के नीचे जो पानी की गुजरगाह है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। और ये चाबहार बिल्कुल इसके माउस पे है, और फिर जो है गवादर इसके सामने आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और गवादर की जो लोकेशन है चाबहार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के साथ, इसकी प्रॉक्सिमिटी इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जहाँ पे बंदर अब्बास की वो पोर्ट है, उसी जगह पे जो पानी की गुजरगाह है, ये गुजरगाह जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कहलाती है। चाबहार, गवादर, ये पोर्ट्स आप इस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ मच दिस पोर्ट इज इम्पोर्टेंट। What are the key aspects of significance of Gwadar Port? Number one is CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। याद रखिएगा हम इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी करेंगे, पूरा इसमें कवर करेंगे। CPEC या चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका पूरा हम वो ओवरव्यू लेंगे जो कि कंप्रीहेंसिव होगा। CPEC के हवाले से वेट फॉर दैट लेक्चर। China wants to bypass the route through Strait of Malacca and the South China Sea. Shorter route via CPEC जो है वो अवेलेबल होगा। ग्वादर पोर्ट से जो निकलेगा ये रूट काफ़ी शॉर्ट होगा और चाइना को ये सूट करता है, इसलिए ग्वादर पोर्ट की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। Now coming to the geostrategic significance of Gwadar Port. Gwadar Port and the flagship China-Pakistan economic corridor are being considered the most important elements of China's strategic outreach. Being the most populous country and second largest economy of the world, China has huge import and export market. दो चीज़ें बहुत चाइना की स्पेशल हैं। एक दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, और दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है, इमर्जिंग इकानमी भी कह सकते हैं। यूएस के बाद जो लार्जेस्ट जीडीपी है वो चाइना का है। इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ट्रेड का पोटेंशियल है चाइना के साथ। चाइना बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है दुनिया की, और एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो ये सारा अगर ग्वादर पोर्ट के जरिए हो तो फिर पाकिस्तान को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। In order to sustain and improve its economic conditions, it needs easily accessible and secure trade routes. The smooth and uninterrupted flow of oil imports from foreign countries is crucial for Chinese industries. चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, और इंडस्ट्री कैसे चलती है, वो एनर्जी के रॉ रिसोर्सेज जैसा कि इम्पोर्टेड ऑयल है या गैस है उसके ऊपर चलती है। वो कहाँ से आएंगे, साफ सुथरे रूट से आएंगे। रूट्स का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए सिग्निफिकेंट है कि जो चाइना के पास ऑलरेडी अवेलेबल रूट है स्ट्रेट ऑफ मलाइका वाला, वो इतना सिक्योर नहीं है। इस वजह से चाइना की जो डिपेंडेंस है वो CPEC और ग्वादर पोर्ट के ऊपर ज़्यादा है। The fact that China imports more than 50% of its oil requirements from the Middle Eastern countries speaks volume of the importance it attaches to secure and alternative trade routes and energy resources. ये फिगर आपने याद रखना है फॉर रिप्रोडक्शन इन द एग्जामिनेशन के 50% से ज़ायद ऑयल रिक्वायरमेंट्स जो है वो इसकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आती हैं। In the absence of alternate routes, these imports and exports have to be carried through the South China Sea, which is notorious for incidents of piracy. South China Sea जो है और ये स्ट्रेट ऑफ मलाका दोनों एक ही रूट के ऊपर आते हैं, और इसलिए ये चाइना इसी ट्रेडिशनल रूट को यूज कर रहा है जो कि सेफ नहीं है। In addition, the troubled Strait of Malacca is another major source of concern for China due to US influence there. वहाँ पे यूएस की नेवी मौजूद है, और किसी भी वक्त अगर वो चाइना की ब्लॉकेड कर दें, देखिए वहाँ पे हॉस्टाइल कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक तो यूएस है और एक इंडिया है। इंडिया ने तो एक दो मौक़ों पे धमकी दी हुई है चाइना को कि हम आपके ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर सकते हैं। अब यूएस का भी इन्फ्लुएंस वहाँ पे है, यूएस की भी नेवल शिप्स मौजूद हैं,
तो वो अगर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक कर दें तो बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना अपनी ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर। अगर ऑयल इंपोर्ट्स ना हो तो इसकी इंडस्ट्री बंद हो सकती है, और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर ये इसकी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, तो इकानमी को बहुत ज़्यादा धचका लेगा। चाइना की इकानमी कोलैप्स हो सकती है अगर ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का ब्लॉक हो जाए तो। The sea route via the Strait of Malacca is roughly 12,000 kilometers, while the distance from Gwadar port to Xinjiang province is approximately 3,000 kilometers, and another 3,500 kilometers from Xinjiang to China's eastern coast. तो अगर हम मिला दें चाइना का जो टोटल फासला है फ्रॉम दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज टू गवादर एंड गवादर टू जो ईस्टर्न प्रोविंस है शिनजियांग, और देन शिनजियांग टू चाइना ईस्टर्न कोस्ट, तो ये टोटल फासला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6,500 किलोमीटर बनता है, जो कि तकरीबन हाफ है, हाफ से कुछ ज़्यादा है। इन केस अगर ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का वाला रूट लेते हैं तो वो 12,000 किलोमीटर बनता है। और यहाँ से एक और फायदा हो सकता है, जो 6,500 वाला रूट भी शॉर्ट है, और दूसरा फायदा ये होगा चाइना को कि ये रूट जो 6,500 किलोमीटर वाला रूट है ये उसके ईस्टर्न प्रोविंसेस से गुजरेगा, ईस्टर्न एरिया से गुजरेगा, और ईस्टर्न एरिया से जब ये रूट गुजरेगा तो ईस्टर्न एरियाज डेवलप होंगे। ये हम बात करते हैं कि सी पैक की एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि शॉर्टर रूट है, दूसरा ये उन एरियाज से गुजरता है जो चाइना के अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं। चाइना के जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, और चाइना की ये बहुत बड़ी प्लान है कि वो अपने ईस्टर्न एरियाज को जो है वो डेवलप करे। एज ए रिजल्ट ऑफ द CPEC, Chinese imports and exports to the Middle East, Africa and Europe would require much shorter shipment times and distances. Thus, Gwadar significantly reduces the distance and vulnerability of important oil imports on which China's economic development depends. The port features predominantly in the China-Pakistan Economic Corridor Plan, CPEC plan, and it is considered to be a link between the Belt and Road Initiative and the Maritime Silk Road projects. It connects Pakistan with China, South Asia, Central Asia, and Iran. It is an economic rival to Dubai and Chahbahar. China's presence due to close to Gulf and Strait of Hormuz. It's a strategic concern for the US and India, and it is estimated that around 60% of the world's crude oil is carried through the Strait of Hormuz. ये है Strait of Hormuz की importance. हम सेपरेट लेक्चर भी करेंगे इस तरह के जो सब टॉपिक्स हैं, जैसा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट। लेकिन फिलहाल ये याद रख लें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है ये दुनिया के जो वर्ल्ड की क्रूड ऑयल की ट्रेड है उसका 60% यहाँ से कैरी होता है, यहाँ से जाता है। तो यहाँ पे चाइना की जो प्रेजेंस है वो US और इंडिया के लिए कंसर्न है ही है, क्योंकि दोनों रिवल ब्लॉक्स हैं। चाइना एक ब्लॉक में है और US और इंडिया दूसरे ब्लॉक में अब आ चुके हुए हैं। इट्स ए प्रोजेक्ट फॉर चाइनाज वेस्टर्न रीजन। अब चाइना के जो वेस्टर्न रीजन है वो अंडर डेवलप्ड है और ईस्टर्न रीजन इसका डेवलप्ड रीजन है। तो ये जो प्लान है ये चाइना के वेस्टर्न रीजन के लिए है। मैं रेक्टिफाई कर दूं, इससे पहले मैं उल्ट बोल गया था। एक्चुअली चाइना का जो वेस्टर्न रीजन है दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड पुअर, और इसका जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे ज़्यादा रोड्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो चाइना का प्लान ये है कि इसके वेस्टर्न रीजन को डेवलप किया जाए। तो उसको कैसे डेवलप करने का प्लान है? CPEC के ज़रिए, रोड्स के ज़रिए, और वहाँ पे इंडस्ट्री कैसे आएगी? जब वहाँ पे ऑयल इंपोर्ट आएगी, वहाँ पे जब रिसोर्सेज आएंगे तो उस वक्त उसको डेवलप किया जाएगा।
और सी पैक का बहुत ज़्यादा रोल होना है इसमें, इसकी डेवलपमेंट में। फिर एक और अहम बात ये है कि जो सी पैक का रूट है, इट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम इंडिया, मोर वार्निंग टाइम इन केस ऑफ नेवल और एयर अटैक फ्रॉम इंडिया। जो ग्वादर पोर्ट है ये इंडिया से काफ़ी फासले पे है, और अगर इंडिया अटैक करता है इस पे, नेवल अटैक करता है या एयर अटैक करता है, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों कंट्रीज के पास वार्निंग टाइम ज़्यादा अवेलेबल है, रिस्पांस टाइम ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंस है। स्ट्रेट ऑफ मलाका प्रोवाइड चाइना विद इट्स शॉर्टेस्ट मैरीटाइम एक्सेस टू यूरोप, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। ये अभी तक की जो ट्रेडिशनल रूट है वो शॉर्टेस्ट है, लेकिन अगर ये गादर पोर्ट और इसके जरिए बन जाता है सी पैक, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा। Advantage of Gwadar port to China is that it will be able to bypass the Strait of Malacca, as we have already discussed it. As of now, 60% of China's imported oil comes from Middle East, and 80% of that is transported to China through this strait. The dangerous piracy-rife maritime route through the South China, East China, and the Yellow Seas. तीन ये सीज हैं, साउथ चाइना, ईस्ट चाइना एंड येलो, ये सारे यहाँ पे पायरेसी की बहुत सारे वाक़यात होते हैं। चाइना का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 60% आता है मिडल ईस्ट से, और टोटल इंपोर्ट का इसका जो इस ऑयल का 80% जो है वो इस स्ट्रेट ऑफ मलाका के जरिए जाता है, जो कि डेंजरस है, सिक्योर नहीं है। These sea routes that pass through the South China Sea near the disputed islands are currently a source of tension between China, Taiwan, Vietnam, the Philippines, and the US. ये अगेन एक बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पे कोई भी कंफ्लिक्ट एस्केलेट कर सकता है, और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका का रूट है ये इसकी सिक्योरिटी को खतरात लाक हो सकते हैं। The CPEC project will allow Chinese energy imports to circumvent these contentious areas. As the world's biggest oil importer, energy security is a key concern for China, while current sea routes used to import Middle Eastern and African oil are frequently patrolled by the US Navy. Thus, Gwadar's strategic location provides China with multiple benefits. It provides a foothold for China at the mouth of Persian Gulf, from where it can secure its interest in the Indian Ocean and check Indo-US naval activities. एक स्ट्रेटेजिक इसकी आउटपोस्ट है जहां से ये इंडो यूएस नेवल एक्टिविटीज को भी चेक कर सकता है। इन द इवेंट दैट चाइना वर टू फेस hostile action from a state or non-state actor, energy imports through the Strait of Malacca could be halted, which in turn would paralyze the Chinese economy. Chinese stake in Gwadar will also allow it to expand its influence in the Indian Ocean, and that is the vital route for oil transportation between the Atlantic and the Pacific. इंडियन ओशन के अंदर इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, और ये अप्रीहेंशन है यूएस को और इंडिया को कि इससे ग्वादर पोर्ट के जरिए और सी पैक के जरिए चाइना एक्सटेंड कर जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन ओशन तक चला जाएगा, इसकी आउटरीच जो है वो बढ़ जाएगी। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू वेस्टर्न चाइना, ये इसी का सिग्निफिकेंस में आता है। इम्प्रूव्ड connectivity to the restive Xinjiang region, thereby increasing the region's potential to attract public and private investment. The Gwadar port will also complement China's Western Development Plan, which includes not only Xinjiang but also the neighboring regions of Tibet and Qinghai. अब इंडिया एंड यूएस के क्या फियर्स हैं इसको लेके, ग्वादर पोर्ट को और सीपैक को लेके। Notwithstanding the fact that Gwadar port has been declared by Pakistan as commercial port, India and the US consider Gwadar to be China's naval outpost in the Indian Ocean region. It suggests that China is aiming to expand its maritime and naval capabilities to project its power and influence. हालांकि चाइना इसे डिनाई करता है, और पाकिस्तान ने भी डिनाई किया है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि चाइना इसको एज ए नेवल आउटपोस्ट के तौर पे यूज करे, ये कमर्शियल प्लान है। Being at the
अब हम देखते हैं कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं पाकिस्तान के लिए, ग्वादर पोर्ट के और सी पैक प्रोजेक्ट के क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। Being at the crossroads of oil-rich Middle East, heavily populated South Asia with a huge consumer market, and the energy-rich Central Asian republics, Pakistan can hugely benefit from Gwadar Port, which is ideally located to attract the import and export traffic of these regions. Owing to its strategic location, the deep-sea Gwadar Port has the potential to serve as the hub that helps in meeting the growing demands for energy resources, alternative and secure routes to the oil-rich Middle East as well as the Central Asian republics. अब बात ये है कि ये एट द क्रॉस रोड्स ऑफ थ्री रीजन, मिडल ईस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, साउथ एशिया जो बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, आबादी बहुत ज़्यादा है, थिक पॉपुलेशन है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि करीब करीब हैं और वहाँ पे एनर्जी रिच ये हैं, तो ये एक हब बन जाता है, एक क्रॉस रोड बन जाता है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान। तो इससे पाकिस्तान काफ़ी बेनिफिट ले सकता है। Gwadar Port is designed to earn huge revenues once it is fully operational. The economic benefits linked to Gwadar Port primarily stem from three factors. Number 1, trade. Number 2, industrial development. Number 3, other port-related activities like proposed gas and oil pipelines which will pass through Gwadar Port. तीन ये एरियाज हैं जिससे पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। अब क्या क्या मिलिट्री बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान को, वो हम देखते हैं। अराउंड 95% ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज डन बाय सी रूट्स। Currently most of Pakistan's import export has to be carried out near Indian border in the east. वो पाकिस्तान की जितनी भी import export सी रूट के जरिए हो रही हैं वो इंडियन बॉर्डर के करीब गुजरती हैं। This has stark consequences of naval blockade and other acts of aggression in case of a conflict with India. अगर इंडिया इकोनॉमिक ब्लॉकेड करता है तो उससे वो जो रूट है उन एक्सपोर्ट्स का ट्रेडिशनल रूट वो खतरे में पड़ सकता है। In such a desperate moment, Gwadar being further 460 km away from India provides an indispensable alternative to the Karachi port complex. Thus, Gwadar port offers Pakistan military much needed maneuvering space and response time in case of urgency. Moreover, in military and strategic terms, it is a necessary and wise strategy to keep vital national assets dispersed. कुछ आपके assets ग्वादर पे हों, कुछ कराची पोर्ट और कुछ मेन कासिम पे। Thus, Gwadar port provides a sigh of relief by lifting the burden of traffic as well as the valuable ships and other related technology concentrated in Karachi port and Port Qasim. Another factor which would go a long way in augmenting Gwadar port security and military significance is China. जब चाइना के इंटरेस्ट आ गए तो फिर अगर इसको कोई खतरा लाहक होता है तो फिर चाइना भी डिफेंड करेगा और चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट में ही समझी जाएगी। Any aggression against Pakistan and Gwadar port would be considered as aggression against China. ये है इसमें चाइना का इंटरेस्ट आ गया तो चाइना की मिलिट्री पावर भी इसके पीछे खड़ी होगी। Pakistan has already leased operations of Gwadar port to China for 40 years. Thus, it could be logically said that Chinese presence at Gwadar port would be a strong deterrent against hostile states. Any external power opposed to the prosperity of Pakistan and China will find it difficult to take aggressive measures fearing a punitive action from China. Now coming to the political and strategic benefits for Pakistan from this Gwadar port. Sea trade is considered one of the major sources of globalization and integration. बहुत ज़्यादा जब सी ट्रेड होगी तो ग्लोबलाइजेशन और इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा ये सोर्स है। और जब
ट्रेड होती है और ग्लोबलाइजेशन होती है तो क्या होता है, मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंस आती है और इंटरडिपेंडेंस ही ग्लोबल पीस या हार्मनी की एक बहुत बड़ी रीज़न होगी इन फ्यूचर। जितना ज़्यादा स्टेट्स और ब्लॉक्स ट्रेड के ज़रिए आपस में इंटीग्रेट होते जाएंगे, जब उनके आपस में इंटरेस्ट मैच करते जाएंगे तो एक दूसरे के साथ वो जंग नहीं करेंगे। ये एक इंटरडिपेंडेंस का कंसेप्ट है, ये ग्लोबल पीस एंड हार्मनी की जामिन है। पाकिस्तान वार्मिंग रिलेशंस विद रशिया विच इज सीकिंग अल्टरनेटिव मार्केट फॉर इट्स ऑयल एंड गैस। रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान की रशिया के साथ जो तल्लकात में सर्द मोरी थी वो ख़त्म हुई है और अभी दोनों ममालिक काफ़ी करीब आए हैं। बिफोर दिस रिजीम चेंज पाकिस्तान और रशिया के दरमियान काफ़ी अच्छे तल्लकात रहे, लेकिन लेट्स सी अब क्या होता है रिजीम चेंज के बाद। ये वो मैप है चाइना के वेस्टर्न प्रोविंसेस का। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो शंघाई, तिब्बत, वेस्टर्न प्रोविंसेस शंघाई, तिब्बत और शिनजियांग हैं, जो कि इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं। शिनजियांग से नीचे पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान से जो सी पैक ग्वादर पोर्ट से निकलेगा वो पूरे पाकिस्तान से होता होता, उसके 2 रूट हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों इधर आके काशगर तक आएंगे। काशगर जो है वो शिनजियांग में आता है और यहाँ से इनको एक्सटेंड किया जाएगा टू द ईस्टर्न कोस्ट। और इसके बाद क्या होगा कि ये जब ये रूट इधर से गुजरेंगे तो इससे जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं वो डेवलप हो पाएंगे। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका का जो मैप है, ये एक स्ट्रेट नैरो स्ट्रेट है, नैरो पानी की गुजरगाह है। और आप देख सकते हैं अगर ये ब्लॉक हो जाए बिटवीन इंडोनेशिया एंड बिटवीन सिंगापुर एंड मलेशिया तो ये काफ़ी मसला बन सकता है चाइना के लिए। और इस पे इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है, इस पे अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस है और रूट भी काफ़ी लंबा है। तो सिक्योरिटी भी इशू है और डिस्टेंस भी इशू है और टाइम भी इशू है। हम बात करते हैं मेजर पावर अलाइनमेंट्स की। रशिया चाइना एक ब्लॉक है। पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं सी पैक के ऊपर और ग्वादर के ऊपर। US and India fears the rising influence of China and Indian Ocean, and both the US and India are opposed to CPEC and Gwadar project. अब बात करते हैं कि ग्वादर पोर्ट के लिए क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जो बलूचिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको देखना होगा, बलूचिस्तान इशू को रिजॉल्व करना होगा। और ये एक चैलेंज है क्योंकि चाइनीज इंडिविजुअल्स पे अटैक हुए हैं। रिसेंटली कराची में ब्लास्ट हुआ और उससे पहले दासू में भी अटैक हो चुका है। तो ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए एक चैलेंज है। और इसमें नो डाउट पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बड़ा प्रोडक्टिवली काम कर रही हैं और बहुत सारे अटैक्स ऐसे हैं जो प्रिवेंट कर दिए गए हैं। और चाइना भी कमिटेड है, उनको भी इन सारी कंस्पिरेसीज का पता है and they are also committed to this Gwadar Port and CPEC projects. Role of the hostile intelligence agencies in funding certain military organizations ये भी चैलेंज है। एंड जो चाइनीज इंस्टॉलेशन इंडिविजुअल्स पे अटैक हुए हैं these are a challenge for the Gwadar Port and the CPEC. What is the way forward? सबसे पहली बात ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसके इंटरेस्ट को ज़रूर देखा जाए, वो CPEC के साथ ग्वादर के साथ मैच किए जाएं, उनको अलाइन किया जाए ताकि ग्वादर पोर्ट और सी पैक से जो फ़ायदा हो उस फ़ायदे के समरात, उस इकोनॉमिक बेनिफिट्स के समरात आम जो वहाँ के बलोच हैं, आम जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन तक पहुँचे। They should not feel that they have been marginalized, they have been exploited, deprived and alienated. More and more Baloch workers and youth should be trained and employed. और इंस्टेड के आप इनको एम्प्लॉय करें, इंस्टेड के ये लोग जो हैं वो किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाएं। उनसे बेहतर है कि हम इनको
कौमी धारे में, नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल करें, इनको जॉब दें, इनको ट्रेनिंग दें, इनको एजुकेशन दें। इनको अगर आपने एम्प्लॉय कर लिया, इनको बिजी कर लिया, तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का को ज्वाइन नहीं करेंगे। इन ऑर्डर टू इंश्योर Baloch representation in key position in the mega projects, government should train students and provide skills along with allocating maximum quotas for Balochs. They should increase the royalties in return for the extraction of natural resources from Balochistan. They should increase the quota for Baloch students in educational institutions. और Baloch स्टूडेंट्स को काफ़ी स्कॉलरशिप मिलने चाहिए। इनको इवन पंजाब की, इस्लामाबाद और सिंध और केपी की यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कॉलरशिप देना चाहिए। The sale of lands to non-local at Gwadar should be minimized, ताकि एक मेजर कंसर्न ये है, अब वहाँ के एक ग्रीवेंस ये है कि जी जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं, वो बलूचिस्तान की जो डेमोग्राफी है उसको ख़राब कर रहे हैं। ये एक ग्रीवेंस है बलोचों में, बलोच जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसमें। और वो उनको फियर ये है कि आने वाले दिनों में ये डेमोग्राफी इतनी एम्बेरस हो जाएगी कि वहाँ पे बलोच माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अंदर से ही बलूचिस्तान के ही लोग, लोकल लोगों को एम्प्लॉय किया जाए। A media campaign should be designed aiming at countering the appeal of foreign-backed insurgents. In order to blunt the appeal of terrorist and extremist elements, a de-radicalization campaign should be launched in this regard. Full implementation of National Action Plan would bring positive results. Thank you, gentlemen, ladies and gentlemen. Hopefully this lecture was useful for you. So, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। Till then, take care. Allah Hafiz.